Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining in. You might be surprised to see me today, starting this session. Usually it's Feroz. But today we have with us a very special speaker. And as you can see on the screen, Sardar Muhammad Abu Bakr. Sardar Muhammad Abu Bakr is a fellow ACCA member and a very accomplished one. Previously, Sardar Muhammad Abu Bakr was the Chief Strategy Officer working at Telenor, and I think about a year and a half or 2 years ago switched to Mobilink Microfinance Bank, where he is the Chief Financial and Digital Officer. So I think Sardar Abu Bakr is a very accomplished member and has a very good view of the microfinance segment or the sector that we're going to talk about today. So who better than him to come in and speak to you directly? He comes in and speaks from his experience mostly. So I'm sure you will enjoy this particular session a lot, and also avail this opportunity to ask as many questions of Abu Bakr as you want. So today's session is mostly going to be interactive. It's very, very interactive. So please keep all your questions ready, keep all your questions coming. I'll ask Feroz also to unmute certain members, attendees who would want to ask questions verbally, directly, but otherwise, as you know, you can ask questions through the questions dialog box in any case. But from time to time, we'll talk about that. So very briefly, first of all, about the microfinance segment. So I don't know how many of you know about the Grameen Microfinance Bank. I think that was the beginning, in a way, of microfinance banking sector or the microfinance sector in this part of the world, coming from Bangladesh. I'm sure Abu Bakr will have more details to share with you on that, but over a period of time, a very short period of time, this particular sector has become very, very important. I mean, previously used to call SME as the backbone of an economy. I think microfinance is a stronger backbone now, and doing a very, very important, playing a very, very important role in the country's economy. So without any further ado, let me hand over to Sardar Abu Bakr, who will take you through the details of this sector and some very interesting conversation ahead. So over to you, Sardar Abu Bakr. Thank you, Harun. Thank you, Team ACCA, for having me. Assalamu alaikum, everyone. It's 6 o'clock, so I'm really curious how many of you are joining, and whoever is joining, it's interesting to know you guys don't have anything better to do in the evening. So either you love learning and ambition, so that's really, really great. I hope no one's forced you to attend this. So the fact that so many of you are dialed in, I'm seeing 68 attendees. 6 बजे मिला लिया आपने 68 attendees ने, तो बड़ी बात है भाई. हमारे वक्त तो ऐसे नहीं होता था जब हम ACCA कर रहे थे, इतना पैशन नहीं था. So good to see. Good to see. I'll try and keep it interactive. Microfinance is the topic, so I'll just try and give you some key themes and also background of why the sector was set up, where it is, where it's going, and how does it interplay with other sectors right now. So microfinance, as the name suggests, is a sector that is supposed to serve the needs of the masses, the underprivileged, the impoverished, bottom of the pyramid. जिनको कमर्शियल बैंक सर्व नहीं करते, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देने का सेक्टर का नाम माइक्रो फाइनेंस है. ये काफी 20 साल पहले बना था पाकिस्तान में, एंड अगेन as Arun, you were alluding to, we have seen the sort of the birth of microfinance happen in Africa and Bangladesh under various models. और the whole objective was कि यार छोटे साइज के कर्जे देंगे, 50,000 रुपए, लाख रुपए के कर्जे देंगे उन लोगों को दूर दराज इलाकों में जो कि अदरवाइज कमर्शियल बैंक से जाके कर्जे नहीं ले सकते. और ये कर्जे देने से वो अपने मोस्टली रूरल जो उनके जॉब्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, बिजनेसेस हैं, उनको फंड कर सकते हैं और वो आगे तरक्की कर सकते हैं. The original model of microfinance was that when you are doing lending, you are not to take a collateral. This is way back, and in Pakistan you probably seen this model with Akhuwat as well कि जी आपने collateral नहीं लेना, जिसके पास कोई चीज रखने के लिए नहीं है उनको भी आपने कर्जे देने.
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में इसके बहुत सारे बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस बने। कुछ SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन रेगुलेट करता है और ज्यादातर जो है वो स्टेट बैंक रेगुलेट करता है। मसला सेक्टर का क्या हुआ? मसला सेक्टर का ये हुआ कि 20-25 सालों में सेक्टर ने 7 से 8 मिलियन कस्टमर्स को सर्व किया था। अब 7 से 8 मिलियन कस्टमर पाकिस्तान में 220 मिलियन की आवाम है, is not exactly serving the masses in terms of financial inclusion. We have not gotten to the masses in financial inclusion. तो उसकी वजह क्या हुई कि 7-8 मिलियन कस्टमर को क्यों सर्व किया फाइनेंशियल इंक्लूजन में माइक्रो फाइनेंस? सर वो और मेरे माय गुड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसकी वजह ये हुई कि हमने रिलाई किया, सेक्टर ने रिलाई किया ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर आउटलेट पे। तो एक जगह पे ब्रांच खोली, ब्रांच ने जिन जिन उस एरिया में जिन जिन कस्टमर्स को सर्व करना था वो सर्व करते थे, और वो जब कस्टमर का लोन पूरा होता था तो वही कस्टमर आके दोबारा लोन लेता था। तो हम कस्टमर एक्सपेंशन से ज्यादा कस्टमर रिटेंशन के मोड में इंडस्ट्री काम कर रही थी, and it was limited to your brick and mortar outlet, your physical branches. Now opening up a branch is not cheap. It takes capex. Now your ACCA members or soon to be ACCA members, you do business cases. अगर मैं किसी कस्टमर से 25% लेता हूँ, 25 रुपए लेता हूँ, उसमें से 5-6 रुपए वापस वैसे नहीं आता प्रोविजन की बेसिस पे, उसके बेसिस पे फिर जो मैंने उसको पैसे देने हैं वो मैंने पैसे रेज भी करने हैं। आजकल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस 15% है, तो 5% ही रह गया पीछे, उसमें मैंने ब्रांच भी खोलनी है, उसमें मैंने लोग भी हायर करने हैं, तो योर मार्जिन इज वेरी स्लिम। This has been one of the reasons where microfinance has not been able to get to 50 million people, 60 million people, and 70 million people as it should have. And dare I say that there has been more success in getting to the masses in microfinance in our neighboring countries, in Bangladesh and India, than we have had. Now, there's been some innovation in this over a period of time, because innovation is also a reason why we were not able to get to the masses. इनोवेशन ये हुआ कि जी एक स्टेट बैंक की रेगुलेशन आई तकरीबन कोई 14 साल पहले, जिसका नाम था ब्रांचलेस बैंकिंग रेगुलेशंस। और वो ये था कि आप ब्रांच के बगैर बैंकिंग कर सकते हैं, और टेलीकॉम कंपनीज को ये कहा गया कि आप अगर बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करें तो आप ब्रांचलेस बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं। तो टेलीनॉर और जायज ने ये सोचा कि यार आए मिलके कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक को खरीदते हैं, कमर्शियल बैंक तो बहुत महंगे हैं, और हम ब्रांचलेस बैंकिंग सर्विसेज शुरू करते हैं माइक्रो फाइनेंस के लाइसेंस के जरिए। फिर उन्होंने टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक बनाया, जो कि एक टेलीनॉर की एंटिटी थी। काफी साल पहले जायज ने एक मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक बनाया, और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए इजी पैसा और जायज कैश के नाम से। इजी पैसा और जायज कैश क्या है? इजी पैसा और जायज कैश ये है कि अब आप ब्रांच के नेटवर्क पे रिलाई नहीं करते, रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो जितना दुकानदार नेटवर्क है जो एलिजिबल है, और बाय द वे दुकानदार नेटवर्क का जो टोटल साइज है वो पाकिस्तान की बैंक ब्रांचेस से कहीं ज्यादा है, आप उनके पास जा सकते हैं और आप दे सकते हैं जी ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दें। वो पीछे आपका एक बैंक अकाउंट खुला होता है। जब जायज कैश और इजी पैसा का अकाउंट है तो पीछे यू हैव एक्चुअली अ बैंक अकाउंट। वो जमा करा दें, पैसे ट्रांसफर कर दें, बिल पे कर दें, ऐप यूज कर लें, तो उससे कस्टमर्स को कन्वीनियंस बहुत सारी है। और अगर आप एकदम से नंबर्स देखें तो जायज कैश का नंबर आज तकरीबन 16 मिलियन मंथली एक्टिव कस्टमर जायज कैश का है, और टेलीनॉर का भी तकरीबन 10 मिलियन कस्टमर है इजी पैसा में। तो इफ यू वर जस्ट टू थिंक अबाउट इट कि suddenly by a branchless model and widening your distribution reach, you are able to reach a much more significant number of customers than you were able to do only through the branch network. एक चीज तो ये होगी, लेकिन दूसरी चीज ये कि this is also not enough. Why is it not enough? वो इसकी वजह ये है कि आज कस्टमर जायज कैश इस्तेमाल करता है या इजी पैसा इस्तेमाल करता है ज्यादातर किस चीज के लिए? बिल पेमेंट्स करने के लिए, मनी ट्रांसफर करने के लिए। जो रियल ऑब्जेक्टिव होता है ना बैंकिंग का, कि आप कैपिटल को उधर लेकर जाएं जहां पे लोगों को फाइनेंस की जरूरत है ताकि वो अपने रोजगार को बढ़ाएं, वो तो बहुत कम परसेंटेज है अभी। इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट होती है जो लोगों को प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होती है, उसकी पेनिट्रेशन अभी बहुत लो है। लोगों के पास जो पैसे बच जाते हैं उनको सेव करना होता है ना। लेट मी पुट इट दिस वे, मैं आसान अल्फाज में बात करता हूँ। देखिए, आपको एक फॉर्म ऑफ कुछ पैसे चाहिए, 200 रुपए चाहिए आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, वो एक आपकी लेंडिंग नीड है।
साथ ही साथ आपने उस कारोबार से कुछ पैसे बनाए हैं, उस पर कुछ आपने सेव करना है, वो एक सेविंग प्रोडक्ट है। कल को आपको अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्शन चाहिए होती है, हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, इमरजेंसी के लिए, ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। सिर्फ पेमेंट इनेबल करना तो माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है कि भाई मैंने अपना फोन रखा, टीप हुआ और पेमेंट होगी। यार बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन कस्टमर कन्वीनियंस है ये। आप यू कैन डू इंटरनेशनल पेमेंट्स, फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। लोकल ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट, स्कूल पेमेंट्स, उसके लिए रिटेल पेमेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो फिजिकल कैश है ना वो बहुत महंगा है, मैं उस पर आता हूँ। बट जो ट्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि क्या जो दुकानदार है उसको मैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दे रहा हूँ डिजिटल तरीके से, कि यार उसको पता है दुकानदार को कि मेरे पैसे आने 8 दिन बाद और मुझे 8 दिन के लिए पैसा चाहिए ताकि मैं अपने कारोबार को बढ़ाऊं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, क्या वो डिजिटली अवेलेबल है? वो बहुत कम पेनिट्रेशन है पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान में अभी भी तकरीबन 25% लोगों के पास बैंक अकाउंट है। अच्छा, उसमें अगर खावातीन का परसेंटेज निकाल दें तो वो ना होने के बराबर है। And this is one of the differences that I saw in microfinance when you compare it with Bangladesh and India. Bangladesh and India में there is a high level of penetration of women financial services which was delivered from the government. And I have to give credit to State Bank कि 2 ही सालों में उनका फोकस आया women financial inclusion। बैंक्स का अपना फोकस नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश की एग्जाम्पल से और ये जो ग्रामीण बैंक की एग्जाम्पल जो हारून ने कोट की, उसमें देखा गया कि जब खवातीन बोरो करते हैं ना, पैसे जब लेती हैं, तो वो ना सिर्फ अपना फायदा करती हैं बल्कि सोसाइटी का भी फायदा करती है। और इसमें मर्द हजरात को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, ये सच्ची बात है। मान लो भाइयों, आसानी इसी में रहती है ना, हर चीज में बहस करने की जरूरत नहीं होती। सो जब गवर्नमेंट enabled schemes थी to get women to borrow money and put it into their agriculture sector, put it into textile, put it into retail and other businesses, they not only empowered themselves but they empowered others around them as well. So अब हमने इवन जायज कैश और इजी पैसा के भी एक नेक्स्ट 2.0 आने की जरूरत है। वो 2.0 आने की जरूरत है कि अब पेमेंट इंटीग्रेशन से बात बढ़ाने की जरूरत है। यस, अभी पेमेंट्स भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। पहले कहते थे जी पॉस मशीन की जरूरत है, भाई पॉस मशीन बहुत महंगी है, कौन लगाएगा दुकान पे। अब दौर है क्यूआर का। क्यूआर इन द नेक्स्ट 5 years में क्यूआर कोड जनरेट होंगे, पेमेंट्स हो जाएगी। बट अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है तो जो आपका एसएमई तबका है, जिसको एमएसएमई कहते हैं, माइक्रो एसएमई तबका, उसको आपको कर्जे देने आसान एक साथ पे डिजिटल तरीके से, आपने उनको सेविंग प्रोडक्ट्स देने, आपको इंश्योरेंस देने, प्लस आपको उनको टूल्स देने हैं, सिर्फ कर्जे की लेन देन नहीं देनी। बैंक्स का भी ये भी काम है, एंड आई टॉक अबाउट मोबाइल बैंक, कि वो सॉल्यूशंस दे सके माइक्रो एंटरप्राइजेस को, एग्रीटेक की सॉल्यूशन दे सके। देखें, अगर सिर्फ कर्जे देने से पाकिस्तान आगे जाता तो हमें बार बार आईएमएफ के कर्जे लेने की जरूरत ना पड़ते। एक वजह है ना जी कि अगर पाकिस्तान का इतना इनकम जो है अभी एग्रीकल्चर से आती है, और पाकिस्तान का इतना ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, नंबर्स में नहीं जाता, आप लोगों को नंबर्स पता है। तो आपको पता है हॉलैंड जो है, नेदरलैंड्स, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप फूड एक्सपोर्टर्स। उनकी टोटल आवाम है 12, 13, 14 मिलियन। पाकिस्तान जिसकी एग्रीकल्चरल लैंड इज अबाउट more than 100x in size of Holland, is not in the top food exporters in the world. Why? The technology, agri-technology. So while it is a government initiative, it should also be a private sector initiative to give farmers tools. Not only farmers, SME sector और भी है। अब सीपैक आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो लोगों को कमर्शियल व्हीकल्स चलाने के लिए फाइनेंसिंग चाहिए होगी, लोगों को अपनी गाड़ियां और अपने इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए सेंसर्स और सॉल्यूशन चाहिए होंगे, लोगों को अपने पैसे रिसीव करने के लिए कलेक्शन सॉल्यूशन चाहिए होंगे, लोगों को तनख्वाहें देने के लिए पेरोल सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। So the true banks and microfinance companies that will stand apart 5 years from now are the ones that have this deep relationship with customers. जो सिर्फ कर्जे की लेन देन करेंगे या कस्टमर्स का पैसा डिपॉजिट लेके रखेंगे, वो वाइप आउट हो जाएंगे। जो उस कस्टमर को एग्री टेक्नोलॉजी की सॉल्यूशन देंगे, कलेक्शन मैनेजमेंट, पेरोल, पेमेंट्स की सॉल्यूशंस देंगे, साथ ही साथ उनकी कैपेसिटी अपलिफ्ट करेंगे। भाई आपने खवातीन को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेकर आना है,
और तो क्या आप खवातीन को ट्रेन कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं डिजाइन थिंकिंग पे? क्या आप उनको बिजनेस चलाने के तरीकों पे, उनको डिजिटल दुनिया में अपनी शॉप्स क्रिएट करने का आप उन्हें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो? अगर आप ये करते हो, व्हाई वुड दे लीव यू? So my view, coming back and creating some structure around this is कि microfinance was set up to serve the financial inclusion needs of the masses, bottom of the pyramid. आपका एक सवाल जरूर इसमें आता है कि भाई क्यों कमर्शियल बैंक्स क्यों नहीं? मेरे दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स इसलिए नहीं क्योंकि कमर्शियल बैंक में 10 साल पहले एक आम आदमी क्यों जाए? कमर्शियल बैंक में तो जाना बड़ी खौफनाक बात थी, उधर हर किसी ने पहने होते हैं सूट और टाई। तो मैं अगर एक छोटा कारोबार चलाता हूँ, मैं क्यों जाऊं सूट और टाई वाले शीशे वाली बिल्डिंग में? नंबर 1। नंबर 2, मैंने जाके बैंक अकाउंट खोलना है क्योंकि मैंने तरक्की करनी है और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। तो मेरे बैंक अकाउंट खोलने के लिए 10 लोगों से मुझे एफिडेविट चाहिए होते थे। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले तक ही ऐसा था कि बैंक अकाउंट खोलना है तो 18 ग्रेड के अफसर के साइन हो बैंक अकाउंट खोलना था। क्यों जाए एक छोटा कारोबार चलाने वाला? तीसरी रीजन, अच्छा मेरे कमर्शियल बैंक वाले दोस्त नाराज ना हो क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं काफी हो, लेकिन जस्ट ट्रेडिशनल। तीसरी रीजन क्या है? कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाता है? हुकूमत से। इस वक्त हमारी हुकूमत, इस वक्त क्या पिछले 50-60 सालों में सबसे ज्यादा मकरूज हुकूमत है, तो सबसे ज्यादा कर्जे की जरूरत हुकूमत को होती है। तो कमर्शियल बैंक्स जब पैसे देते हैं हुकूमत को, वो हुकूमत से ही मार्कअप में इतना कमा लेते थे, तो बाकी कारोबार वालों को और छोटे सरमायाकार वाले को देने की क्या जरूरत है कमर्शियल बैंक्स को? They're earning well by just lending to the government. That is why there was a gap in the market where microfinance sector was required to give financial services to the bottom of the pyramid, and financial inclusion मुल्कों को आगे लेकर जाता है। अच्छा काम हुआ माइक्रो फाइनेंस में, 7-8 मिलियन कस्टमर तक पहुंच गए, पोर्टफोलियोज डेवलप हुए, लेकिन आगे स्केल नहीं हो सका। क्यों नहीं स्केल हो सका? आप लिमिट हो गए ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस से, और इनोवेशन नहीं थी। ट्रेडिशनल मॉडल था, आओ ट्रैक्टर का कर्जा ले लो, आओ क्रॉप का कर्जा ले लो, इनोवेशन नहीं थी, डेटा यूज नहीं होता था। बैंकिंग में व्हेन यू यूज डेटा एंड से व्हाट डज अ कस्टमर यूज अ फैसिलिटी फॉर, व्हाट इज द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसको हम डिजाइन थिंकिंग भी कहते हैं, आप कस्टमर्स के साथ प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, तो वो इनोवेशन नहीं थी। इनोवेशन आई टेलको से 10 साल पहले, जब उन्होंने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किया और वो ब्रांचलेस बैंकिंग सर्विसेज खोल दी, इजी पैसा, जायज कैश और बाकी सर्विसेज खुली। जब वो सर्विसेज खुली तो एकदम से बहुत सारे बैंक अकाउंट खुल गए। जितने ये वॉलेट्स हैं ये सब बैंक अकाउंट्स हैं। आपके पास इस वक्त ज्यादा वॉलेट बेस्ड बैंक अकाउंट्स हैं एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल ब्रांच पे जाके खुले। उससे पेमेंट्स की बड़ी आसानी हुई, उस पे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, रेस्टोरेंट की पेमेंट्स, स्कूल की पेमेंट्स, बहुत सारी आसानी हुई। डिजिटल बिजनेस चलाने की बहुत सारी आसानी हुई। अच्छा, इस आसानी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान में कैश जो प्रिंट करने की सालाना कॉस्ट क्या है? तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए लगते हैं पाकिस्तानी हुकूमत को कैश को सालाना प्रिंट करने में। अगर ये डिजिटल हो जाता है तो 15 से 20 अरब रुपए की तो डायरेक्ट सेविंग है। फिर भाई ये कैश कहीं रखना होता है, कितने कारोबार चलाने वाले लोगों को कैश की ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है, उसमें सिक्योरिटी का कितना बड़ा रिस्क होता है। तो अगर ये डिजिटल हो जाए तो बड़ा फायदा है। अब ये जो प्लेयर्स थे, जायज कैश, इजी पैसा, बाकी, तो उन्होंने ये आसानी बड़ी पैदा की, बट बहुत सारी कंपनियां और छोटे सरमायाकार इनको अभी भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? भाई अगर वो डिजिटल यूज करते हैं और कैश यूज नहीं करते तो ये तो टैक्स के नेट में आ जाएंगे। तो बहुत से छोटे सरमायाकार वैसे ही पिस रहे हैं, उसने टैक्स देना ही नहीं है या हुकूमत को ट्रस्ट नहीं करता टैक्स देने के लिए, तो वो कहते हैं भाई हमें तो कैश ही चाहिए, क्योंकि हमने आगे भी कैश देना है, हमने डिजिटल नहीं होना। तो उसके लिए हमें साउथ कोरिया की एग्जांपल देखनी है। हर जगह टैक्स ब्रेक अच्छी चीज नहीं होती। साउथ कोरिया में जब आपने माइक्रो एसएमई सेगमेंट, जो एक बैकबोन होती है इकोनॉमी की, छोटा इन्वेस्टर, छोटा एंटरप्रेन्योर, छोटा बिजनेसमैन, जब उसको उन्होंने 2-3 सालों के लिए टैक्स की छूट दी, तो वो सारे लोग जो टैक्स नेट से बाहर भागते थे ना, वो टैक्स नेट में आ गए। 3 साल के बाद टैक्स भी देना शुरू हो गए, कैश की उन्हें सेविंग भी मिली, उन्हें डिजिटल तरीके से कर्जे भी मिले।
तो हमें वो इंसेंटिवाइजेशन करने की जरूरत है, वरना आप बैल मुझे मार कोई क्यों करेगा कि यार मैं कैश में डील करता हूँ तो मेरा टैक्स में नहीं है, तो मैं डिजिटल कर दूं तो सारा रिकॉर्ड एफबीआर के पास आना शुरू हो जाए, चाहे हम जितनी भी मॉरल पुलिस इसमें बन जाए। अब इनका फ्यूचर क्या है? इनका फ्यूचर ये है कि जी पेमेंट्स तो इंटीग्रेशन हो रही है और क्यूआर हमें फैलाना है बहुत सारी पे, बट इन वॉलेट्स के जरिए हमने लोगों को कर्जे देने हैं, हमने लोगों को सेविंग्स देनी है, हमने लोगों को इंश्योरेंस देनी है। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ ये आएगी कि ये प्रोडक्ट्स हम ये टेलकोस के साथ करें, बट और चीजें भी करें। हम वो छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनको टेक्नोलॉजी दें, टूल्स दें, उनको एग्री टेक की सर्विसेज दें पार्टनरशिप्स के जरिए। कोई भी बैंक अकेले में नहीं कर सकता। देखो, व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड, एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ माय ACCA फाइनेंस पीपल, a brand is created by a deeper relationship with customers. If you have a transactional relationship, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमसे पैसे लिए, बस छुट्टी करो, well, you're not going to have a deeper relationship with customers. But if you are giving that customer means to grow their business, कि यार मैं उसको एग्रीटेक की सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं उसको इंश्योरेंस दे रहा हूँ, मैं उसके लिए पार्टनरशिप्स कर रहा हूँ दराज और बाकियों के साथ, तो then you create a brand. So this has to be the future. अब आ जाते हैं, मैं एक आखिरी जो बात करना चाह रहा था थोड़ा सा बिफोर वी ओपन अप टू क्वेश्चंस, कि रेगुलेटरी लैंडस्केप कैसे है अभी और किस तरफ जा रहा है। I have to give credit to the State Bank on this. It has been a fantastic regulator, and I mean this over the last 2-3 years. Mobilink Bank ने भी इस पे काम किया। आज Mobilink Bank का 40% पोर्टफोलियो माइक्रो एसएमई सेगमेंट के लिए। आज हमारा अपना वुमेन इंस्पिरेशन नेटवर्क प्रोग्राम है दैट इज जस्ट फोकस्ड ऑन वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमने पार्टनरशिप्स की हुई है दराज के साथ, केयर इंटरनेशनल के साथ, जिसमें हम खवातीन बिजनेसेस को दराज पे सेलर्स बनाते हैं और 6 महीने के लिए दराज उनसे सेल्स कमीशन नहीं लेता। हमने स्मार्टफोन फाइनेंसिंग शुरू की है, जिसमें अगर आपको लो कॉस्ट स्मार्टफोन चाहिए वो हम देते हैं, और साथ 6 महीने के लिए डेटा भी फ्री देते हैं, क्योंकि आज लोग जो इस डिवाइस से अपना कारोबार चला सकते हैं वो उसमें बहुत आसानी है, और इस डिवाइस को हमें सस्ता करने की जरूरत है। रेगुलेटर ने इसमें बहुत सारी हमें सपोर्ट किया ओवर द लास्ट 2 years. So the state bank has now come up with a scheme called Asan Digital Account. That's the first thing I want to talk about. Asan Digital Account का मतलब ये है कि now, and I would like you to go to State Bank's website and search this Asan Digital Account. Now you do not need to come to a branch to open up a bank account. Yes, आप दुकानदार पे जाके इजी पैसा जैज कैश अकाउंट खोल सकते हैं, प्लस आप बैंक्स की वेबसाइट्स पे जाके अपनी लाइव तस्वीर, कुछ प्रूफ ऑफ इनकम और कुछ फील्ड्स फिल करके आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं और आपका प्रॉपर बैंक अकाउंट खुल सकता है विदाउट एनी इंटरफेस। दिस इज फॉर स्मार्टफोन यूजर्स। अब अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो स्टेट बैंक ने शुरू किया स्कीम, इट्स कॉल्ड आसान मोबाइल अकाउंट, कि यूएसएसडी आपको पता है क्या, #786 #782, जिसपे आपके पास मेन्यू आ जाता है फोन पे, 1 2 3, ये चाहिए, एक दबाइए, कर्जा चाहिए, बैलेंस चाहिए, 2 दबाइए। वो आसान मोबाइल अकाउंट की सर्विस अवेलेबल है फॉर पीपल हु आर फीचर फोन यूजर्स। Then the State Bank has come up with something called RAST, RAAST, which makes transfers free between accounts, and your phone number becomes your bank account. So you can register for a RAST account online as well. Plus, there are new regulations coming in. The latest regulation is called Digital Banking Regulation, जिसमें आप now as a proper bank you can operate without any branches. ये अभी first licenses उसके दिए गए नहीं है, वो देने की जरूरत है आगे. And the regulation that I am, or guidance that I am very pleased with from the State Bank is their banking on equality policy. बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी इज अ पॉलिसी जिसमें वो ये कहते हैं कि आपके हर प्रोडक्ट में जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, खवातीन के लिए प्रोडक्ट्स होना चाहिए, पॉलिसीज में होना चाहिए, जो स्टाफ डील कर रहा है आगे फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे, उनकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हुई हुई हो कि खवातीन के साथ कैसे डील करना है। क्योंकि खवातीन को सिर्फ कर्जा नहीं देना होता कि यार, अभी बहुत से बैंक्स ने क्या किया है इसमें, माइक्रो फाइनेंस इंक्लूडेड इन अदर बैंक्स, जब स्टेट बैंक ने कहा कि खवातीन की ग्रोथ बढ़ाएं, तो जो प्रोडक्ट था ना मर्द हजरात के लिए, वही उन्होंने रीनेम करके खवातीन को बेचना शुरू कर दिया। तो यार ऐसे तो नहीं होता ना, यू हैव टू टेस्ट विद कस्टमर्स एज टू व्हाट देयर नीड्स इज एंड व्हाट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड है। इंटरनेशनल एग्जांपल्स देख लें कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स कैसे तरक्की की है।
I always like to give the example of Musoni of Kenya. Musoni of Kenya is a microfinance institution जो digital हुआ. डिजिटल से मुराद क्या है? यस, आपकी ब्रांचेस हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी ब्रांचेस खत्म नहीं होंगी, उसकी जरूरत है. प्लस आप डिजिटल सॉल्यूशंस देते हैं, आप ऐप वेब पोर्टल्स देते हो कि कस्टमर्स डिजिटली ऑन बोर्ड हो. आप वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से पार्टनरशिप्स करते हो टेलकोस के साथ, द लाइक्स ऑफ टीसीएस एंड कोरियर कंपनीज के साथ, ताकि वो आपके बैंकिंग एजेंट्स बन सकते हैं, ताकि आपकी सर्विसेज हर जगह अवेलेबल हो. फिर उन्होंने डेटा को यूज किया. ये बैंक्स का बहुत बड़ा मसला, इवन बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स का. 2 साल 3 साल पहले तक उनके पास डेटा वेयरहाउस नहीं था. डेटा वेयरहाउस क्या होता है? डेटा वेयरहाउस ये होता है लोगों कि यार मेरे पास एक पेरोल सोल्यूशन है, कस्टमर सोल्यूशन है, एक बिलिंग सोल्यूशन है, उस सब का डेटा एक जगह आ रहा हो और उस डेटा वेयरहाउस में वो कैप्चर हो रहा हो ताकि डिसीजन मेकिंग हो रही हो. बहुत से कमर्शियल बैंक्स के पास डेटा वेयरहाउस नहीं था, माइक्रो फाइनेंस तो दूर की बात. उसकी वजह से पर्सनलाइजेशन नहीं हो रही थी. You were unable to assess the needs of customers and offer them what they need on a personalized basis. This has to be the future for microfinance. There has to be a customer segmentation analysis. There has to be a focus on digitization. And if we are able to do this, then जो objective है microfinance का, जो कि था financial inclusion for all, financial inclusion for the masses, वो fulfill हो सके. Please remember that financial inclusion for all is not just payments digitization. यार एक चीज की मैं कैश देता था वो डिजिटल हो गया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल. नो, दैट इज वन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल. द ट्रू पावर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कम्स के लोगों को आप प्रोटेक्शन दें. भाई इंश्योरेंस हो उनके पास. ये अभी फ्लड्स कितने आए हैं, अगर इफ दे कुड हैव रिलाइड, कितने कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स आए, if they could have relied on an insurance service जो उनके पास डेली वीकली मंथली प्राइसिंग पे अवेलेबल हो. ये काम होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल और माइक्रो फाइनेंस का. पाकिस्तान में मैं उम्मीद करता हूँ 6 महीने साल हो रहा है. आई वर्क विद द गवर्नमेंट सेक्टर इन स्टार्टअप्स एज वेल एंड एडवाइजरी कैपेसिटी कि जो आपके यूटिलिटी कंपनीज हैं, इमेजिन करें आपके महीने का बिल आता है बिजली गैस पानी का. क्यों? अगर एक गरीब के पास महीने के पैसे नहीं है तो वो एक दिन की बिजली या एक दिन की गैस क्यों नहीं खरीद सकता? बैंक से कर्जा ले, 5 दिन के लिए छोटा कर्जा ले, डिजिटली उसको मिल जाए 5,000 रुपए 10,000 रुपए, और पीक सर्दी है और उसको जो बिलिंग कंपनीज है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन की गैस खरीद सके, पे एज यू गो मॉडल. दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. आप लोगों को प्रोटेक्शन दे सके. फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि लोगों को आप वो फंड्स दे सकें जिससे वो कारोबार अपना बढ़ा सकें. उसके लिए माइक्रो फाइनेंस बैंक I आई think you're गेस आई back. एम बैक. जबरदस्त. तो मैं ये कह रहा था कि डेटा यूज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने डिजिटल लैंडिंग आगे करनी है तो कस्टमर्स के बारे में डेटा और कस्टमर्स की नीड्स के बारे में डेटा नहीं होगा तो वो कैसे कारोबार बढ़ाएंगे. और आपने कारोबार बढ़ाने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिटेलर, योर मर्चेंट, योर स्मॉल बिजनेसमैन, ये होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन. प्लस आप उनको पैसे बचाने के जराए देते हो और आप उनको पैसे रिसीव करने के और देने के तरीके देते हो. दिस इज अ बिट ऑफ अ लैंडस्केप. हारून, इधर अजान हो रही है, सो I'll just say one more thing and I'll just wait for a second. The main regulators are the State Bank of Pakistan and the SECP. Maybe a good point, Harun, if there are some initial questions, so we can take them now. I think we have a couple of questions, but let's for the Azan to end.
G, maybe we can go to some initial questions. Sure. We have Mohammed Ijaz. Mohammed Ijaz wants to know the microfinance banking sector serves the agriculture sector, like farmers having 3 to 4 acres of agri land, which represent majority of the agri land holding. So he wants to know if a microfinance bank would serve such customers. Absolutely, this is the typical customer base. A typical customer base is a small farmer with small land holdings that needs funding, because आपको पता है कि किसान को क्रॉप साइकिल में सोइंग और हार्वेस्टिंग के दरमियान बहुत से पैसों की जरूरत पड़ती है, उसमें जनरली एक आरती बीच में आके इनकी नीड पूरी करता है. सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ माइक्रो फाइनेंस कस्टमर हैज बीन a farmer with small land holding needing finance tractor, needing finance for their sowing season and before their harvesting season. But at the same time अभी more and more micro SME segment की तरफ भी रुझान बढ़ा है. माइक्रो SME सेक्टर से मुराद मेरी ये है कि ना सिर्फ एक किसान बल्कि एक दुकानदार, एक ऐसा दुकानदार जो कि ब्रेड अंडे दूध बेचता है, एक ऐसा दुकानदार जिसका छोटा सा वेयर हाउस है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने 10 कमर्शियल गाड़ियां चलाता है, वो उसके 10 जो है वो सुजुकी वो पिकअप ट्रक्स है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं. वो कस्टमर्स भी अब माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स बन रहे हैं. There is another interesting question from Hamad. He wants to know, do microfinance banks also keep credit rating history of customers? यार देखो, ट्रेडिशनली तो द ऑनेस्ट आंसर इज नो, बट शुड दे हैव बीन? यस. देखिए, क्रेडिट रेटिंग होती तो है. सो फॉर देयर इज अ रेगुलेशन जिसमें कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग ECIB जो है वो क्रेडिट ब्यूरोज पाकिस्तान में बन गए. क्रेडिट ब्यूरोज का काम क्या है कि जी जितने भी आपके कस्टमर्स की क्रेडिट हिस्ट्री है वो आप शेयर करते हो एक ब्यूरो के साथ. वो ब्यूरो जो है मेंटेन करता है, और स्टेट बैंक उस ब्यूरो के साथ भी काम करता है, आपके साथ भी काम करता है, तो हमारे पास है. बट क्या उसको रोबस्टली इस्तेमाल किया जाता है? रोबस्टली इस्तेमाल करने से क्या मुराद है? अभी इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इस बंदा पहले जो है कर्जा मकरूज ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, उसका डेट पहले से इतना कर्जा लिया हुआ है तो मजीद कर्जा ना ले. उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस्तेमाल होता है. बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल होने की जरूरत है ना कि यार इसको बेहतर प्रोडक्ट क्या दिया जा सकता है, इसकी पिछले 10 साल की नीड्स क्या थी, ये स्मार्टफोन यूजर है या ये फीचर फोन यूजर है, ये अर्बन पाकिस्तान में रहता है या रूरल पाकिस्तान में रहता है, इसकी तो उसकी डेमोग्राफिक्स, उसकी एज, उसकी इनकम लेवल्स, उसके पास ट्रेंड्स की बेसिस पे उसको बेहतर प्रोडक्ट्स देने की जरूरत है. वो अब आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ा है. ओवर द लास्ट 10 years or so it has not been the best. Okay, another question. You might have heard about the fintechs in Pakistan that are giving a small amount of loan, and they're charging a lot of spread on top of Kybor. So a question related to something out of a situation. Hassan Atif wants to know, what is the spread charged by microfinance bank? If it's more than the commercial banks, will it be feasible for small customers to incur high costs? ये सवाल किसने पूछा है? बहुत अच्छा सवाल है. It's Hassan Akif Dar. Hassan Akif Dar sahab, smart question my friend, good question. I'll tell you what has happened till date and what needs to happen going forward. What's happened till date was कि जी देखें, आपके पास आज मोबाइल बैलेंस रन आउट होता है ना, मोबाइल बैलेंस, तो टेलको जो है आपको 100 रुपए 50 रुपए का कर्जा देता है. वो कहता है यार आपको मोबाइल बैलेंस आपका पूरा हो गया और आप कुछ कर रहे थे, वीडियो स्ट्रीम कर रहे थे या ज्यादातर जो है पबजी खेल रहे होंगे, तो आपको वो कनेक्शन बहाल रखना है. तो वो कहते हैं यार 50 रुपए 100 रुपए हम आपको देते हैं, जब आप अगला रिचार्ज करोगे तो हम उसमें से काट लेंगे. इसी तरह बहुत से बैंक्स ने डिजिटल नैनो लैंडिंग शुरू की. उन्होंने कहा जी आपको 1000 रुपए 2000 रुपए 3000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और लोगों को पड़ी होती है, किसी भी की जरूरत के लिए हो सकती है, चाहे उन्होंने घर में कुछ खरीदना है या पबजी खेलनी है या कुछ और करना है, तो 1000-2000 रुपए किसको नहीं चाहिए होते. वो अमूमन जो है 1 महीने से 2 महीने का कर्जा होता है. वो 1000 रुपए के बाद आपको शायद जब आप वापस करोगे 2 महीने बाद, तो शायद आप 1500-2000 रुपए वापस कर रहे हो. वेरी हाई प्राइसिंग एज यू सेड.
लेकिन वो मैसेज के लिए प्रोडक्ट था, उसमें कई लोग, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, उसको बड़े फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। फ्रूट सेलर इस्तेमाल कर रहा है, उसको चाहिए 1000 रुपए हफ्ते के लिए, उसको पैसों का प्रॉब्लम नहीं है वापस करना 1500-2000 रुपए, लेकिन उसको चाहिए। और वो कन्वीनियंस ये थी कि वो प्योरली डिजिटल है, मतलब वो आपके मोबाइल वॉलेट में या आपके मोबाइल बैलेंस में वो पैसा फौरन चला गया विद इन अ मिनट, तो कन्वीनियंस थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान किस तरफ लेकर जाने की जरूरत है, जहां जा भी रहे और रेगुलेटर के साथ हम काम करें। There is a difference between what is called a consumption loan and a productive loan. A consumption loan is कि मैंने टीवी खरीदना है, मैंने आज जो है ना 1000 रुपए मुझे चाहिए क्योंकि मैंने पिज्जा मंगाना है, या और उसके बाद मैंने कुल्फी खानी है जमील की, तो दिस इज अ कंजम्पशन लोन। 1000 रुपए आपने ले लिया, आज आपने ऐशी कर ली, अपने दोस्तों को भी ऐशी करा दी, कल को वापस करने पड़ जाएंगे डबल। इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव लोन। Where we are moving to now in the future, where companies need to move in the future, is by giving small ticket productive loans at a more affordable pricing. That means for a large segment in Pakistan, 5,000 rupees, 10,000 rupees, 50,000 rupees is a huge amount of capital for their daily or weekly or monthly needs. There are so many small businesses that can thrive if they have 30,000, 50,000 rupees. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मोबाइलिंग बैंक का, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नॉट दैट इट्स अ सेल्स पिच। हमने एग्रीमेंट साइन किया फूड पैंडा के साथ, एंड दिस इज द पावर ऑफ एग्रीमेंट्स। फूड पैंडा के साथ हमने एग्रीमेंट क्या साइन किया? फूड पैंडा के होम शेफ्स हैं, आप फूड पैंडा से खाना ऑर्डर करते हो ना यार, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसमें खवातीन की बहुत परसेंटेज हाई है, जो अपने घर से बैठ के खाने बना रहे हैं और फूड पैंडा पे बेच रहे हैं। This is productive because it is giving people an opportunity to grow their livelihood. Now उन लोगों को एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिनों के लिए 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए तक चाहिए होता है, बिकॉज पेमेंट्स आने में और पेमेंट जाने में फर्क है। हम उनके लिए डिजिटल नैनो लैंडिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनको बगैर ब्रांच विजिट किए हुए बेहतर रैशनलाइज प्राइसिंग पे फैसिलिटी मिले, वो वर्किंग कैपिटल अपनी बिजनेस में यूज करें और अपने होम बिजनेस को ग्रो करें। दिस इज अ प्रोडक्टिव फैसिलिटी, and I tell you not this is, and I mean this immensely, the satisfaction that you get when you see your facility being used for productive purposes, it is amazing. Same we are doing with Draz. So what we've done is कि जी हमारी खातून कस्टमर्स हैं, वो अपना, उनके बहुत से आउटलेट्स हैं ब्रिक एंड मॉर्टर। हमने द्रास, हमारा विमेन इंस्पिरेशन नेटवर्क और द्रास के इब्तिदा प्रोग्राम हमने एग्रीमेंट किया। हमने कहा अगर आज आपकी एक दुकान है, छोटी दुकान है खातून का, आपकी हम दुकान क्रिएट करते हैं द्रास पे, आप द्रास पे सेलर बन जाए और हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे कि आप द्रास पे सेलर कैसे बन सकते हैं। और जब द्रास से आप सामान बेचेंगे तो फिर तो आपके पास पूरी दुनिया ऑडियंस है। और हमने एग्री किया कि 6 महीनों के लिए द्रास उनसे कमीशन नहीं लेगा। सो टिल डेट, to answer your question, till date these small loans have been high price consumption loans, left right and center। उससे बैंक्स ने पैसा भी कमाया है, कस्टमर्स को कन्वीनियंस भी मिली है। फ्रैंकली स्पीकिंग, more and more the discussion now is कि ये जो छोटे कर्जे हैं इनको इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लोन्स की में कन्वर्ट करें, कंजम्पशन के लिए काम करें, प्रोडक्टिविटी के लिए करें। एंड आई थिंक यू विल सी दैट डायरेक्शन फ्रॉम फिनटेक्स एज वेल। 6 to 12 months उसकी जरूरत भी है। देखिए अगर ये सारे फिनटेक्स अभी भी कंजम्पशन फाइनेंसिंग करते रहेंगे ना, तो ये बहुत बड़े बैड डेट्स होते रहेंगे। अगर आप हर किसी को 5,000 2,000 रुपए लेते रहेंगे और वो उसने अपना वॉलेट से पैसे निकाल दिए, तो आप पैसे वापस कैसे लेंगे? तो शुरू करने के लिए तो साल 2 साल चल गया, बट नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस नीड्स टू इवॉल्व, एंड इट विल इवॉल्व बिकॉज वी आर वर्किंग विद द रेगुलेटर ऑन इट एज वेल। Thank you. Can we take two or three more questions? Is that fine if we take 2 or 3 more questions? Absolutely. Yeah, sorry, I didn't know you were speaking to me. Absolutely, let's do that. Sure, sure. Okay, another question from Rohan. One of the major issues when lending to SME sector is lack of enforceable collateral, which is why conventional banks are hesitant in lending to this sector. What have been the developments in this regard? Yeah, sorry, आप question repeat कर सकते हैं? Sorry, apologies.
So Rohan wants to know when it comes to lending to the SME sector, there's lack of enforceable collateral, which is why conventional banks are hesitant in lending to this sector. So he wants to know what are the developments in this regard when the SME is not able to present a collateral against the lending requested. Another great question. I'm happy to get these questions from the ACCA audience. That shows कि ये जो हमारे ACCA students, affiliates, members हैं, इनके careers हैं, माशाल्लाह, and even if they're at the start of their careers, they have careers not just in accounting and debit and credit, and they have careers in business. And I always say this: if you're a finance professional, you can add more business value than a lot of people in the company. So always focus on that. देखिए दो चीजें, like any sector, it's about focus. The commercial banks, I told you, did not need to focus on the SME sector because they were making money off the government. The pure जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो एक इंडिविजुअल किसान को लैंड कर रहा था, तो जो MSME सेगमेंट है, माइक्रो SME सेगमेंट, वो इग्नोर हो गया। 6 ट्रिलियन रुपीस की पाकिस्तान में माइक्रो SME सेगमेंट की मार्केट साइज है। 95% ऑफ दैट इज सर्व थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स। उनकी नीड्स ही सर्व नहीं हो रही फाइनेंशियल इंक्लूजन की थ्रू फॉर्मल बैंकिंग। उस इसके लिए करने के लिए यू मस्ट हैव अ रोबस्ट कैश फ्लो एनालिसिस। कोलैटरल नहीं है, कैश फ्लो एनालिसिस तो है ना, उनकी फिजिकल इन्वेंट्री की ओवरव्यू तो है, उनके स्टॉक साइकिल्स का तो ओवरव्यू होगा। एंड मैं एक और आपके पास एक टैक्टिक बताता हूँ। देखिए, अगर मैं हूं और मैंने एक SMEs को लैंड करना है, मैं SME के पास जाऊंगा, कहूंगा दिखाओ तुम अपना कैश फ्लो दिखाओ, अपनी इन्वेंट्री दिखाओ, तुम अपना प्रोडक्ट बताओ। अगर मुझे इस तरह 10 मिलियन लोगों के साथ एक एक करके जाना पड़े तो फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द मैसेज तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन यार ये देखो कि वो जो SME छोटा जिसको मैं कर्जा देना चाह रहा हूँ, वो किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करता है, वो यूनिलीवर के साथ काम करता है, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सामान बेचता है, या दराज का सामान बेचता है, या TCS का सामान बेचता है, या वो MNP का सामान बेचता है, या वो कोका कोला का सामान बेचता है। ये बड़ी कंपनीज के पास उस SME का तो डेटा होता है कि कौन सा मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सा बुरा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, कम पैसे मिलते हैं, वो डिफॉल्ट करता है या नहीं करता। अगर आप B2B2C यूज करोगे तो you can get data on a bigger SME pie and be able to develop credit scoring for a bigger mass inclusion. Of course, you need permissions for getting access to data. But what I'm going to try and say here is that if you want to get to a bigger SME segment quicker, you cannot only reach out to the SME. Of course you can, but वो एक relationship है. If you reach out to the companies that work with the SME and say कि यार आप हमारे साथ मिलें इनको फाइनेंशियल इंक्लूड करने पे, उनसे इजाजत लें कि यार उनका डेटा उनके पास अवेलेबल हो, कौन से अच्छे हैं, कौन से के पास क्या कैश फ्लो साइकिल्स हैं, then you can develop better models that can be more scalable. So B2B2C, my friend. Okay, another question. Ajwad Ali, he has written a lot of things, but let me highlight the takeaway from the question. He wants to know about what can be done for customers who do not return the amount that has been secured by the bank or the microfinance bank. After a few installments, they just refuse to pay, or they have decided not to continue in repaying what they have taken from the bank. So what would be the possible reasons to tackle such situations or customers? Possible reasons, देखें, एक तो you have natural calamities as well. You had COVID that impacted businesses, and we saw a lot of restructuring of portfolio in that time. And then you had floods. So, for example, if flood situation में देखें तो बहुत से borrowers will not be able to return capital. Now, where there are legitimate reasons, I think both the regulator and banks are quite flexible. So I can cite precedent here कि जब कोविड के टाइम आया था तो स्टेट बैंक ने 1 साल के लिए रिकवरीज ऑप्शन दी थी कस्टमर्स को कि आप 1 साल के लिए पैसे वापस ना करें। अभी फ्लड का कितना डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट है, तो उसमें देयर इज फर्दर रिलीफ दैट कुड बी एक्सपेक्टेड एंड विल बी एक्सपेक्टेड एंड इट्स वारंटेड. Same thing with banks. The bank and the customer has a commercial relationship, and in microfinance segment, you will find them to be more open to having good discussions with customers around rescheduling, where you have
proper valid reasons that need to be ascertained. Now जहाँ पे proper valid reason नहीं है, meaning ये कि किसी ने पैसे क्या यार मैं नहीं खेलता, मैंने पैसे आपको देने ही नहीं, then there is a recovery effort, right? So there is a recovery effort that happens, number one. Number two, there is communication with the regulator. Communication with the regulator means that, like in developed societies, if you do not repay your loans, your credit score gets affected negatively, and you cannot get future facilities. You cannot get a future loan. You cannot get a bank account open. You cannot get insurance. Or one of the reasons why State Bank created credit bureaus in Pakistan is to gather this kind of information, ताकि उनकी जो future access to finance है, वो limit हो जाए. और कौन चाहता है कि उनकी फ्यूचर एक्सेस टू फाइनेंस लिमिट हो जाए. सो जहां पे लेजिटिमेट रीजन नहीं है, वहां पे इन एडिशन टू रिकवरी एक्शन, रिपोर्टिंग एंड वर्किंग ऑन द रेगुलेटर सो दैट that kind of customer is actually taken out of the financial inclusion ecosystem. Another question: if credit history similar to ECIB reports not maintained by microfinance institution, then how they prevent safeguard their portfolio from defaults? देखिए दो तीन चीजें हैं. Of course, the credit scores that are come out of your credit scoring model and credit bureaus is one input. So now with the credit bureaus, you have wealth of data. You have data from telco sources, you have data from financial sources, and that whole wealth of information that goes into your credit score, number one. Number two, you can use technology now. So this is where I spoke about agri-tech. Now through having longitudes and latitudes and satellite imagery, there are companies that can tell you कि इस बंदे की इस दफा कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, बुरी होगी, इसको कैश फ्लो कब आएगा. So you can use technology to assess. Number three is that you are able to doing a sector-based customer analysis. Again, if you use a customer analysis that is generic, I don't believe that I can do the same kind of credit appraisal process for a customer in agriculture versus a customer that does commercial vehicles or is in textile. So you need to have a sectoral customer analysis approach, which needs to be then built into a model eventually. देखिए अगर आपने स्केल करना है ना, स्केल और डिजिटल और टाइम टू मार्केट कम करना है, कि किसी ने कर्जे के लिए अप्लाई किया और 2 साल वेट ना करें, यू विल नीड रोबस्ट मॉडल्स. अब इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. Most of the technology sector has developed solutions for small ticket loans. ये जो पहले भी सवाल है, 5,000 रुपए कर्जे के लिए, 10,000 कर्जे के लिए. The technology credit scoring models that can serve a customer digitally for 100,000 rupee loan, 200,000 rupee loan. The people who are able to develop this in the technology space, I think they will become preferred suppliers for many companies. So to summarize, credit scoring, credit bureau scores, using technology such as satellite imagery, using sectoral information, and of course you cannot rule out the human contact with your relationship officers in the community and on the field. We have a follow-up question, Abu Bakr. SPP has restrictions on clear financing, and regardless of cash flows, as per regulation, collateral is a requirement. As cash flow on their own is not considered collateral, has there been any developments by the SBP on encouraging FIs and ease collateral requirements for SMEs? ये सवाल किसने पूछा है? ये मुझे पहले ये बताओ फिरोज साहब, ये सवाल आपने फीड किए हुए हैं या लोग पूछ रहे हैं? नहीं, these are actual questions. ये कोई बैंकर ज़रात है या ये हमारे ACCA मेंबर्स हैं या एफिलिएट्स हैं, कुछ है आइडिया में? Yes, all of these are a part of BFSI sector. Most of them would be assumedly working in banks. Cool, very good. This is great. I'm enjoying this conversation. Keep the flag of ACCA high, guys. You ask questions that a lot of, let me put it this way, बहुत सारे banks और corporates के ना CEOs ये इस तरह सोच नहीं रहे जिस तरह आप लोग सोच रहे हो. So the last 10 odd questions I received, all of you can be CEOs one day. I trust me on this. Don't let anyone say no to you. Make your way up. अच्छा, coming to the question now specifically. State Bank की जो regulations है ना for microfinance,
वो इवॉल्व हो रही है. So State Bank would say कि जी a certain percentage of your portfolio can be secured, and by secured State Bank की traditional definition थी gold backed lending कि जी gold backed lending से ज्यादा. So for example State Bank ने कहा था 35% of your portfolio से ज्यादा gold backed नहीं हो सकता. उसका objective भी ये था कि आप unsecured lending करें जिसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है देने. फिर हमने कहा अगर आपने MSME segment को Mobiling Bank, I actually wrote to them, was the first to write to them last year. I worked very closely with the regulator on new innovation, and we've gotten many approvals for device financing, digital lending, because they see the trust. We said to them कि यार अगर मैंने SME sector को कर्जा देना है, commercial vehicle loan देना है, for example, every commercial vehicle loan I give, मेरी capital adequacy ratio dilute होती है because it is not treated by the State Bank as a secured lending, क्योंकि secured की definition में तो सिर्फ gold आता है. तो मैंने कहा जी फिर why would I finance the SME sector? If every loan that I do is bad for my capital, it's treated as unsecured, why would I finance the SME sector? तो हमने ये कहा कि जी जब आप फॉर एग्जांपल कमर्शियल व्हीकल की एग्जांपल ले लें, हम उसमें गाड़ी के कागजात अपने पास भी जॉइंट पेपर्स होते हैं, तो इट इज कोलैटरलाइज्ड. सो व्हाट स्टेट बैंक हैज डन इज कि स्टेट बैंक ने, जो आप कह रहे हैं ना क्या किया जा सकता है, स्टेट बैंक ने कहा कि जितनी ये एसएमई सेक्टर की लेंडिंग है ना, हाउस लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, ट्रैक्टर लोन, अदर बिजनेसेस लोन, उन लोन्स की जो राइट ऑफ की डेट्स है ना वो नॉर्मल लोन से आगे होगी टू हेल्प बैंक्स फोकस ऑन दिस सेक्टर. मिसाल के तौर पे अगर आम कर्जे की किस्त 210 दिन पे नहीं आती और वो राइट ऑफ हो जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं यार कमर्शियल व्हीकल लोन है ना, तो आप 300 दिन तक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप टाइम दें. अब दिस इज एन इंसेंटिव फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फोकस ऑन दिस सेगमेंट. सो इस तरह की इंसेंटिव्स पे काम किया है. अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को इम्प्रूव करने के लिए भी काम हो रहा है कि अब गोल्ड की थिंकिंग से हम निकल आए और जो बाकी कोलैटरल्स है ना, फॉर एग्जांपल जॉइंट व्हीकल पेपर्स और जॉइंट कस्टडी ऑफ हाउस और कैश फ्लो एनालिसिस, जो कैश फ्लो रोबस्ट कैश फ्लो एनालिसिस है, उसको भी हम लेवरेज करें. साथ ही साथ आई कैन नॉट फॉरगेट बाय सेइंग दैट स्टेट बैंक हैज हैड इट्स ओन एसएमई फाइनेंसिंग स्कीम. मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक सेमिनार पे इस्लामाबाद में बोला था कि एसएमई शुड स्टैंड फॉर स्मॉल मीडियम इमरजेंसी, because we need to focus on this sector if Pakistan's economy is to grow. उसी revenue sources पे कब तक खेलते रहेंगे. And State Bank has come up with its own SME financing scheme जिसमें in a nutshell वो protection देता है. मतलब वो banks को कहता है आप दो SME को कर्जा, certain element नहीं आता तो SPP will finance that. So वो scheme भी SPP की has been good. Another follow-up question is from Ajwad Ali. Ajwad Ali asked about how we can recover, or what could be the recovery action for the lending that the borrower has now decided not to pay off. So specifically keeping in mind digital means of lending and also considering the cost of litigation and merge amount of loan, say 100,000, what could be the best possible recovery action if we're considering that the amount has been lended through digital means? देखिए एक तो if a large part of your portfolio, देखिए एक certain recovery natural calamities को अगर ignore करते हैं, normal business की बात है, if a large part of your portfolio is not coming back, तो पहली बात तो ये कि आपकी जो क्रेडिट रिस्क टीम है ना और जो आपकी बिजनेस टीम है, पहले तो जाके उनसे सवाल पूछे कि आप लैंडिंग करते कैसे, क्या आप ग्रुप लैंडिंग कर रहे हो, एडजस्टमेंट लैंडिंग कर रहे हो, क्या आप अनसिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड लैंडिंग कर रहे हो विदाउट प्रॉपर रिव्यू, क्या आपका सेक्टर या कस्टमर फोकस्ड अप्रोच है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड है. एक तो बैंकिंग में ये पड़ा ना, एक किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया दूसरे ने कॉपी कर दिया, कस्टमर की नीड को सॉल्व नहीं किया, प्रोडक्ट फेंकी जा रहे हैं. तो एक तो ये यार, अगर इफ एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ योर लोन starts getting in your defaulted territory other than natural calamities, you need to ask some serious questions on how you assess credit risk and how the business approaches a customer segmentation approach in the market. Bankers ये बहुत सी चीजें understand नहीं करती to have a customer approach. They just create products without knowing कि what is the customer, who is the customer, what do they need, future customers क्या होंगे. अब अगर digital है, I can give you some suggestions. कि डिजिटल का कर्जा अगर वापस नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो. वेल डिजिटल के कर्जा जो डिस्पर्स हुआ होगा
वो किसी टेलको के साथ पार्टनरशिप में भी हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली, या आपकी एज अ डिजिटल क्रेडिट प्रोवाइडर आपकी किसी टेलको के साथ पार्टनरशिप होगी. So one route could be to have an agreement with the telco कि जब वो आइंदा रिचार्ज करेगा ना अपना 99% ऑफ पाकिस्तान इज प्रीपेड, जब वो टॉप अप करेगा अपना अकाउंट तो पहले कर्जे की अमाउंट कटेगी. एक अप्रोच. दूसरी अप्रोच ये कि अगर आपने उसको डिजिटल लोन दिया है वॉलेट में, तो जितने का लोन है उतने का डेबिट ब्लॉक लगा लें, या उसका 50% का डेबिट ब्लॉक लगा लें. उसका अगर 30%, 20%, 50% का डेबिट ब्लॉक लगा लिया, इसका मतलब है कि उससे ज्यादा वो पैसे वॉलेट में से निकाल नहीं सकेगा. तीसरी चीज आप ये उसे कहेंगे कि भाई अगर आप मुझे एक सर्टेन टाइम तक पैसे नहीं देते तो आपकी जो क्रेडिट रिपोर्टिंग है टू द स्टेट बैंक वो भी खराब हो जाएगी. So these are just three examples on which you can get recovery efforts for digital financing. But digital financing में भी कहूँगा कि again you need a customer segmentation approach. You should not just be giving out 5,000 rupees everywhere. That has been done by everyone in the market, I have to confess. But this will need to change in the future, otherwise a lot of companies will be wiped out. Trust me on that. Very comprehensive and detailed answer. Last question is from Mohammed Awazan. Quite interesting question. I hope you like that as well. So he wants to ask, can BNPL sector such as Kist Pay, Kal Pay, Credit Pay, can these be categorized as microfinance? Or is there any news or regulation regarding these becoming microfinance channels? देखिए, by definition तो they are microfinance, but the licensing entities are different. So मैंने जिस वज़ान के वक्त मैंने कहा था कि दो मेन रेगुलेटर्स हैं सेक्टर के. एक है द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. मैं क्योंकि टाइम कम है मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूँ डिफरेंस. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप माइक्रो फाइनेंस लाइसेंस लेते हो, डिजिटल लेंडिंग आप कर सकते हो. उसमें आप लोगों को कर्जा दे भी सकते हो, आप लोगों से पैसा डिपॉजिट ले भी सकते हो. दूसरा रेगुलेटर है SECP, Securities Exchange Commission of Pakistan. They have come up with regulations called that regulate NBFCs and NBFIs, non-banking finance companies या non-banking finance institutions. Basically वो भी लाइसेंसेस देती हैं जो कि सस्ते हैं और आप उसके जरिए लोगों को कर्जा दे सकते हैं, लेकिन सिंपल फॉर्म में आप लोगों से पैसा ले नहीं सकते. उसके एक एडवांस फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल रख रहा हूँ कि SECP के लाइसेंस में आप आवाम से पैसा रख नहीं सकते, लेकिन आप किस्तें दे सकते हो. अच्छा, फिर क्या करना है आपको? अगर आप लोगों को पैसा दे सकते हो और आवाम से पैसे ले नहीं सकते, तो पैसा देने के लिए भी तो कोई पैसा आना चाहिए. तो एन NBFC मॉडल needs to be funded through equity because you cannot take public money to finance your lending. देखो, आप लोगों से डिपॉजिट लेते हो और आगे आप लेंडिंग करते हो SPP में. SECP ने कहा हम आपको सहूलत देते हैं भाई, आप कर्जे अगर आप देना चाह रहे हो NBFCs बनाओ, but you cannot keep public money. So your equity shareholder needs to have a lot of capital or an agreement with a commercial bank to fund your operations. So a lot of this sector is also now being taken forward by through licenses of the Securities and Exchange Commission of Pakistan. But the nature of the credit by definition is microcredit. Okay, there's last question. Let's make it the last question. So Umair Ahmed wants to know why not SMEs help local startups? We saw closure of celebrated startups recently. What required to be done to help new startups to be more liquid and thrive? How SMEs could replace venture capitalists, the venture capitalist culture, since Pakistan lacks venture capitalist culture in general. देखिए, दो मैं क्विकली आंसर कर देता हूँ. स्टार्टअप्स के फेज में ना दो स्टेजेस होते हैं. Most of the startups are either in incubation phase or acceleration phase. I worked with and mentored, and we worked with a lot of startups over many years in my previous role and company as well. Incubation phase of startups वो होते हैं कि आपके पास एक आइडिया है और बस. So you need the mentoring, the knowledge, the money to take the idea from an idea to a product that can be sold. एक्सेलरेशन स्टेज, जो ये इंक्यूबेशन स्टेज होता है. जो एक्सेलरेशन स्टेज स्टार्टअप होता है वो ये होता है कि आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसकी प्राइसिंग अवेलेबल है, उसको स्केल करना है, पार्टनरशिप्स करनी है, स्केलेबिलिटी करनी है.
many startups are not looking for loans. They are looking for equity, because a startup at the start doesn't have the financial muscle to even repay a loan. So जो बैंक्स के ट्रेडिशनल मॉडल्स है ना, और यार ये लोन ले लो साल बाद इतने इंटरेस्ट पे दे दो, इंक्यूबेशन फेज में उनके पास तो कैपिटल होता ही नहीं है, उनके पास तो एक आइडिया है. तो इंक्यूबेशन फेज में जितने स्टार्टअप्स होते हैं ना, दे आर मोस्टली एंगेज्ड इन, दे रिक्वायर equity, and that is where your private equity firms, that is where banks can also create their equity investment arms. That is where the government's efforts through national incubation centers come in, is needed. When a startup starts to scale and is generating income, they are then interested in loans, in financing. This includes freelancers, because agar Pakistan mein, a lot of financing needs to go to your IT sector, because I truly believe it can be 10 times where we are today in 5 years. जितना आपका IMF का कर्जा है ना, ये उतर जाएगा. I beat it. और हम कुछ steps भी suggest किए हुए governments को the last year or two. So when a freelancer starts to make money, or a startup starts to make money, then they need a loan, not necessarily equity. So ये थोड़े से different models हैं. पाकिस्तान में इसका रुझान कम रहा है. क्यों रहा है? Because पाकिस्तान में अगर आपको रिटर्न चाहिए ना, तो सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो रियल एस्टेट में पैसे डालते हैं या सोने में. और उसकी वजह ना मेरे भाई और बहनों, पिछले 30 सालों में रियल एस्टेट एंड सोना हैज बीन द मोस्ट लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स. But real estate investment, with all due respect, is the most unproductive investment for economic growth of a nation, because you are not generating more capital. When you have C returns, long-term returns come in from capital markets, mutual funds, startup investments, that is when वो रुझान बढ़ता है. You need success stories for that. I think वो journey शुरू हो गई over the last few years. 2 steps forward, 1 step back है. ये रहेगा पाकिस्तान में. लेकिन I truly believe कि this segment, the startup segment, will help us create more tech savvy solutions in the next 5 years. Thank you, Bakar. I think that's all. That's all the questions that were raised from the participants. And thank you so much for your time. Thank you so much for the knowledge. A lot of members who had joined today have benefited from your knowledge and from your experience. And that's it. I think it was a very great session. Good change of knowledge, good exchange of knowledge by the participants and by yourself as well. Anything that you want to add? No, it's a pleasure. Always available for ACCA, and especially ACCA members and students here. I don't know if this was beneficial, because I struggle to interact freely when I can't see or hear my audience, but I hope you found it useful, guys. Enjoy your evenings. बहुत इन्वेस्टमेंट कर ली अपनी डेवलपमेंट पे, अब 7 बज रहे हैं, चाहे करो टाइम. Thank you very much, Abu Bakar. It was fantastic, and really had fun with you. I'm sure members also enjoyed. We'll keep you posted on the progress and development that these members who've joined today will make in their program, in this training program, as well as in their professional lives. So we have a WhatsApp group for this specific cohort of members who are participating in the BFSI training program. So with your permission, if you are available and you can see WhatsApp group messages, can we add you to that WhatsApp group? I mean, I can tell you these are very serious, senior members interested in the banking sector. So very focused. So if you're interested, and with your permission, we can add you to the group, if that's okay with you. I'm sure members will continue to benefit from your presence. Sure, I will say this to the members: you need to look at the sales techniques of Harun, right? And learn this. When you ask a question in front of 100 odd people, how can I possibly say no? Okay, Harun, mujhe add na karo group mein. So see, this is persuasive marketing. So Harun, feel free to add me to the WhatsApp group here. I'll add you there. Brilliant. Thank you so very much. Thank you for your time, and enjoy the rest of the evening, ladies and gentlemen, all the participants. Bye. Allah Hafiz. Thank you.